भुवनेश्वर स्थित मास्टर कैंटीन छकठारे कैफे बोक्कारे लॉन्च होईची ब्लू टोकाई कॉफी। कलिंग देसी एग्रो फाउंडेशन रो मिलित सहाय्यरु ब्लू टोकाई कॉफी भुवनेश्वर रे लॉन्च होई जायछि। कॉफी उत्पादन क्षेत्र रे ओडिशा कृषकों मान्यता पाई कलिंग देसी एग्रो फाउंडेशन बहुत चेष्टा करछन एवं सही चेष्टार फल जे आज भारत वर्ष रे कॉफी उत्पादन क्षेत्र रे मां मंगला प्लांटेशन एवं मधु एग्रो प्लांटेशन रो ना रहिछि। सम्मानित अतिथि भावे जोग देथिले इनवेक कन्वेनर मिस सुकीर्ति पटनायक। KDF गोटे सेक्शन 8 नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि कोरापुट अंचल रे काम करूची। आमे गत 18 मास हला कोरापुट रे काम करूछु अराउंड बिल्डिंग द इकोसिस्टम फॉर कॉफी। आमे गोटे क्यूरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट लास्ट ईयर सेठी पकेइथिलु। तो कॉफीटा एठी प्रोड्यूस होउथिला सेटा चिकमंगलुर को जाई कि चिकमंगलुर रे मिसी कि सेटा साउथ इंडियन कॉफी हिसाब रे बिक्री हे जाउथिला। किंतु आमे जल कोरापुट को गलु आमे जानि परलु कॉफी क्वालिटीटा बहुत भलो सेठिकार फार्मर्स को तार राइट प्राइस मिलुनी मिडल मैन पैसा नहीं जाउची। आउ सेते बेला आमे भाबिलु लेट अस डू अ लिटिल रिसर्च। आमे तले कपिंग कलु आपण आश्चर्य हेबे जो कॉफी क्वालिटीटा बहुत भलो बाहरिला। आमे फील्ड विजिट्स करछु कर्नाटका तमिल नाडु आमे क्यूरिंग वर्क्स केमिति से ऑपरेट करछु आमे देखिलु पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग केमिति होछि आमे सिला करछु। आमे लोकल कॉफी बोर्ड हेडक्वार्टर जोटा बैंगलोर रे अछि सेठी जाई कि तांकर टेक्निकल कंसल्टेंट्स मान सहित परामर्श करछु एंड एक पूरा जिंसो जोटा आमे प्राय 3 रु 4 मास भीतर आमे एक्सटेंसिव फील्ड स्टडी करू ता परे आमे कलिंगा देसी एग्रो फाउंडेशन रो मॉडेलटा मु सब बेले कहे कि मु ओडिशार बहुत बड़ फैन मु जड़े ओडिया बहुत गर्व मैंने लगे कि आम सब ओडिशावासी किसी भी करूँ स्पेशली जो नारी जन करूँ तो मुझे सब ठिया हुए एंड प्रीति पट्टनायक सी आम बोर्ड मेम्बर जड़े INWEC सी आज एत बड़ गोटे इनिशिएटिव नहीं आम देखु तार केते सक्सेस KDF is a brand of Odisha again and so चासी मान को भी बहुत सपोर्ट करछन। I think all of us should support her and the entire team of course and मैं जानी छी कि ये कंपनी आगे को जाए कि बहुत बड़ा हो क्योंकि दुनिया रे समस्त कॉफी पियंती and the whole world is a customer जीवर्स को छाड़ी एटा प्रथम थर पे ब्लू टोकाई जो कॉफी कंपनी अछि सी हला स्पेशलिटी कॉफी होची आपण देखंतु कमर्शियल ग्रेड कॉफी हला जोटा आपण इंस्टेंट कॉफी फिल्टर कॉफी रे जोटा पळौची जहार ओरिजिन की कोड बाहर होची काहा किछ जणा पडुनी। स्पेशलिटी कॉफी होची उत्तम कॉफी जोटा ब्लू टोकाई परिका कंपनी एमाने मार्केट करंती डोमेस्टिक मार्केट रे भी अछंती और सेमाने भी इंटरनेशनली भी जापान रे एंटर कलेनी। तो प्रथम थर पे कि रिकॉग्निशन मिलुची कोरापुट को गोटे नेशनल स्केल रे एज स्पेशलिटी कॉफी। तो ये जो लॉन्चटा हेची एटा ए अगस्त मास रे ही ताकर गोटे डेब्यू सीरीज अछि जोथरे कि फर्स्ट टाइम पे इंडिया रे 6टा फार्म से माने रिकॉग्नाइज करूचंती एज स्पेशलिटी कॉफी प्रोड्यूसर्स। Don't you think that the climate shift is affecting the coffee production in your areas? Absolutely. Indeed, coffee is grown in a microclimate and the microclimate requires your temperature and your rainfall to be in ambient conditions. The moment you go beyond a particular level of rainfall, the rainfall for that particular area or that particular microclimate adversely affects the coffee. If you would have noticed during our presentation also, we spoke about one of the most critical factors of Koraput coffee is moisture. The moment, as people would be aware, Koraput is today receiving a lot of rainfall. The problem is that there is a lot of rainfall when there should not be a lot of rainfall and there is a lot of heat when there should not be a lot of heat. The balance that KDF tries to bring in is to ensure that this moisture content which becomes heightened by, like you mentioned, these low pressure events happening in the Bay of Bengal, they should not adversely affect. Controlling it would require systemic changes which needs to be brought in by the government and to be executed by us. But for us right now, controlling that aspect is very, very important because there is a huge potential, sir. With the rains coming in, the production of coffee which is happening in Koraput will only dwindle and we do not want that. As an organization, we want more and more coffee to be produced, but with the changes of this microclimatical conditions, it is adversely affecting the coffee there which needs to be corrected. So what suggestions or what kind of measures that you want that people must take from the city or the government must initialize so as that the coffee production is not affected in Koraput?
So one needs to understand that the climate is one big cycle. The small thing that you do at your home will have an impact which may not be calculable, but it certainly does have an impact. People staying in the cities, start off with the small things. Do not waste plastic. Do not use single-use plastic. Try and pool together so that you have to go to a place where 6 of you are going. You do not need 3 vehicles to go in there. These small steps, right, will eventually play into the ecosystem and will help us keep our climate in the way it was. Small steps every day, like this, a charity starts at home. So any small step would really help us, and it's my implore, it's my genuine request as somebody who's been seeing the coffee economy for such a long time, for everyone to take those small steps so that we can make a difference at the field.